Hello, everyone, and welcome to this Hindu editorial analysis brought to you by An Academy. And I'm Vaishnavi, your presenter. Hi, Rahi. Good afternoon. Long time, Rahi. Where did you go off? Somesh, hello. Aditya, hello. Madhvi, hello. Fierce, hello. Hello, good afternoon. Namaste, Somesh, Aditya. Ace legal में. Okay. Asif. Yes. Hi, Asif. Lovely to see you here. Sneha, good afternoon. Harshika, good afternoon. Long time. Yes, yes, very, very long time. मैं तो बहुत अच्छी हूँ. आप कैसे हो, हर्षिका? आप कैसे हो? Just 1 second. Okay, so let's get started with the session. Sorry about the delay. Let's get started with the session. मैम मैं हर जगह हूँ. मैं हर जगह हूँ. Somesh is everywhere. Okay. Omnipresent Somesh. All right, so this is my Telegram channel. अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, please do subscribe to the channel. Uh, it's called Unacademy underscore Vaishnavi underscore CLAT. You can scan this QR code and it'll take you straight to the channel. Okay. All right. And my कोड इज वैष्णवी 10. जहां भी आपको लगता है कि किसी एजुकेटर का कोड इस्तेमाल करना है, आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे. जी जी जी, मेरा कोड इस्तेमाल करोगे. Okay. All right. So we have got today we are discussing something that has become a huge topic for the world, and everybody is talking about it. Lekin we are not going to talk about opinions on this. Okay, we are just going to look at the editorial. ठीक है. अब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है यहाँ पर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं. सबसे पहले है ओवरऑल. ओवरऑल इज अ वर्ड दैट यू विल generally see a lot when we are talking about especially politics. Okay, overhaul एक ऐसा word है जो आप बहुत बारी देखोगे, and this word is
a noun, okay, it is a noun जिसका मतलब होता है the act of completely changing a system so that it works more efficiently, okay, or sorry effectively. तो basically किसी system को completely change कर देना, okay, ताकि वो ढंग से काम करे, अच्छे से काम करे, that is called overhaul, ठीक है। जनरली हम क्या किस चीज के लिए यूज करते हैं, ओवरऑल मशीन्स के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए यूज करते हैं, जब किसी चीज को आपको फिक्स करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कार और अ मोटर बाइक, इफ यू हैव टू फिक्स इट, आप क्या करते हो उसको, यू टेक इट, you take out all the pieces, okay, of the machine, and then you know rebuild it, okay, so that is to completely taking it apart, okay, overall is to completely taking a machine apart or a gadget apart so that you can uh, make it all right, okay, तो वहां से आया है, but the connotation over here is the act of completely changing a system so that it works more effectively, ठीक है। कंप्लीटली चेंज कर देते हैं, कंप्लीटली चेंज कर देते हैं सिस्टम को ताकि वो और अच्छे से बेहतरीन तरीके से काम करे, ओके। देन वी हैव स्ट्राइक डाउन समथिंग, स्ट्राइक डाउन समथिंग इज अ फ्रेजल वर्ब, ओके, स्ट्राइक डाउन समथिंग इज अ फ्रेजल वर्ब। श्रुति, गुड मॉर्निंग, a newcomer, okay, welcome Shruti. So sentences, make sure that you start making sentences, new or old, does not matter. All of you are looking at the words. सबको words दिख रहे हैं, सबको meaning समझ में आ रहे हैं. Start making sentences, okay? मैम खुद से तो साइकिल को भी नहीं खोलता, खोला करो सोमेश, समझ में आ जाएगा how it works, okay? खोला करो. Aditya, lawmakers are overhauling the welfare program. Very nice. Good job. So I have Aditya Vadiraj कुलकर्णी. ओके, सो आदित्य कुलकर्णी इज द आदित्य जो बहुत पहले से मेरे साथ है ना, 2025 के लिए. Somesh. um and there is another Aditya over here, Aditya Bhaskar. Yes, all right. नाउ टुडे, आज जाके मुझे आपका पूरा नाम पता चला आदित्य, मैं पढ़ती ही नहीं थी. CLAT aspirants need to overhaul his or her preparation after unfortunately not qualifying. Okay, after unfortunately not qualifying the exam so that they can start from the beginning. In the beginning, in the beginning. मैम मैं भी हूँ बट लाइव नहीं था. हाँ, हाँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दी आदित्य जिससे मेरी बहुत सारी इंटरेक्शन हुई है, जो एस लीगल क्लास में है, बैच में है. Yes. All right. Strike down something is a phrasal verb. देखो, strike down something या strike something down भी यूज करते हो, ओके, लेकिन यहाँ पर हम strike down something यूज कर रहे हैं in this context, ओके, ये एक phrasal verb है. ओके, स्ट्राइक डाउन करना मतलब अगर हम कोर्ट के बारे में बात करें तो टू डिसाइड दैट लॉ और रूल इज इलीगल, उसको इलीगल बोल देना, एंड शुड बी इग्नोर्ड, ओके. सो ऐसी चीज को स्ट्राइक डाउन करना मतलब क्या हो गया कि किसी चीज को इलीगल घोषित कर देना और उसको बोल देना कि अब ये नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द लॉ है, ओके. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर अगर सिगरेट्स, ओके, सिगरेट्स बैन हो जाते हैं, ओके, सिगरेट्स को स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है, मतलब सो द कोर्ट डिसाइडेड टू स्ट्राइक डाउन सिगरेट और सिगरेट consumption, okay, nicotine consumption or something like that, okay. So that in that case the
स्ट्राइकिंग डाउन इज बेसिकली, इसको इलीगल बोल दिया गया कि अगर आप अब सिगरेट खरीदेंगे तो दैट वुड बी इलीगल. ओके, ऐसा हो जाना चाहिए. ऑल राइट, सो दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट. ओके, सो स्ट्राइक डाउन, ओके, इज टू किसी चीज को इलीगल घोषित कर देना. ओके, Knesset. Okay, this word is Knesset. Knesset is the noun. Okay, is a noun because it is a name. What is it a name of? It is the parliament of modern Israel. Okay, modern Israel का parliament को क्या कहते हैं? Knesset. ये 1949 में establish हुआ था और इसमें 120 members होते हैं elected every 4 years. Okay. All right. So Knesset is the parliament of modern Israel. Okay, that is it. Okay, आपको समझ जाना है कि Knesset यूज किया गया है तो वो किस चीज का नाम है? पार्लियामेंट का नाम है. किसके पार्लियामेंट का नाम है? इजराइल के पार्लियामेंट का नाम है. ओके. All right. Setback is a noun. Okay, setback dash या hyphen नहीं लगाते हैं because it is always used together. So setback, someone facing a setback. Okay, setback is a noun form जिसका मतलब होता है something that happens that delays or prevents a process from developing. Okay, ऐसा कुछ चीज जो किसी process को delay कर देता है या prevent कर देता है from developing. Okay, तो we faced a small setback in our journey to success. Okay, we faced many setbacks on a journey to success, or we faced quite a number of setbacks when we were preparing for law. Okay, all right, so CLAT aspirants need to overhaul. ये तो मैंने पढ़ लिया था. Nowadays, most factories overhaul labor work over automatic machines. Very nice, very nice. Um, good job, Asif. Moving on to the next one. In the beginning. New bill hit and run is applied to strike down the vehicle driver group. Okay, strike down the vehicle driver group. Okay, not strike down by the vehicle driver group. Okay, very nice. By the order of Peaky Ducking Blinders, I am going to overhaul the system of smuggling of drugs, which uh, goes to London. Somesh, isn't that the opposite of what Peaky Blinders were doing? They were actually the drug smugglers. But okay, good sentence. Okay. All right. Um, something that happens that delays or prevents a process from developing is a setback. Okay, boycott kar dena. Okay, next word is boycott. Okay, boycott kar dena is a verb form that means you can change it to boycotting, boycotted. Okay, so boycott is to refuse to buy a product. Sorry, yes, is to refuse to buy a product or take part in an activity as a way of expressing strong disapproval. Okay, so to refuse to buy a product or take part in an activity as a way of expressing strong disapproval. Okay, आप किसी चीज को boycott कर रहे हो. Okay, तो जैसे कि हमने टिकटॉक को बॉयकॉट कर दिया. ओके, सो वी हैव रिफ्यूज टू यूज टिकटॉक. ओके, वी हैव रिफ्यूज टू यूज टिकटॉक. ओके, एक तरह से अपना वे ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग. ओके, सो ऑफ टिकटॉक. ओके, has suffered a serious setback in his political career. Okay, he has suffered a serious setback in his political career. Very nice, Aditya. Good job. Good job. Um, Ravneet, and boycotting indigenous stuff by the coalition. Hi, Ravneet. Coalition government scrapping old laws and boycotting. So, is there a previous? Okay, so you started the statement with and. Okay. And boycotting indigenous stuff by the coalition government, scrapping old laws which were
flexible, which were more flexible, can't be justified, can't justify this overall, okay, can't justify this overall, which could lead to a new problem for the Knesset. Okay, very nice. Good job, Ravneet. ठीक है, I have made some changes in your statement. Please just hear it out, okay? They are building their business in every field. Every field. Field. Government strikes down alcohol in Gujarat, but foreigners can buy alcohol with permit. Very nice, very nice. Yes, that is true. That is true. This is continuation. Okay, all right. Swadeshi movement led to boycott of foreign goods. Okay, Swadeshi movement led to boycott of foreign goods. Very nice, Madhavi. Good job. Way to scrap from studying should be set back by me. Mm-mm. Um, Scrapping studying is a setback for me, was a setback for me. Okay, आपने strike कर दिया studying को, आपने scrap कर दिया studying को, basically आप उसको साइड कर दिए कि अब ये this is not part of my plan, और उसके बाद आपने setback experience किया वो करने के बाद, right? So all right, Ravneet, okay, got it. But I haven't got the ऊपर वाला, I just got this one. All right, all right, all right, everyone. 12:09, I would like to say. 12:09, the class has started. All right. Okay, moving on to the next word. Michael Myers boycotted the behavior of being a normie. Okay. Very nice, Somesh. Good job. Hello, NLS Bengaluru. All right, so let's move on to the next one. Scrap. Okay, scrapping something. Okay, scrapping something is to basically किसी चीज को scrap किसको कहते हैं, जो unnecessary useless material होता है उसको हम scrap कहते हैं, right? So when we are using it as an action, so scrapping is basically to not continue with a system or plan. कोई system और plan को आप बंद कर रहे हो, okay? So you are letting it go. Let it go. Okay. Wait कर रही हूँ कि आपकी क्लास का आज से ही. Wow. Okay. So I understood what you were trying to say, even though, yeah, thank you for waiting. But it starts every day at 12. Please make sure that you are here by 12. I will try making it by 12, but if I'm not here by 12, I'm definitely here by 12, before 12:10. Okay. So just that 5 to 6 minutes. I might be late, which is not something that I'm proud of, but I might be late. So, but you will find me on this channel every day between 12 to 1. And apart from this, you're going to find me more in a lot of places. But what am I talking? ठीक है, आपको यहाँ मैं मिल जाऊंगी 12 बजे, okay?
ओके। सोमेश, मैंने ये देखा नहीं है, बट आई नो माइकल मायर्स इज द कैरेक्टर, बहुत फेमस कैरेक्टर है फ्रॉम दैट मूवी दैट यू वर टॉकिंग अबाउट. वंस आई saw the picture, I remembered the movie. Okay, it's that the man who wears skin of um his victims and has a knife. That is Michael Myers, right? Hi, Nawasha. Good afternoon. Good afternoon. No problem. No problemo. No problemo. Nawasha, no problem. Um, an Italian diary declared Giorgia Meloni as the man of the year, which is a major setback, and this demonstrates the gender bias and misogyny. As the man of the year, which is a major setback. Why? Okay. Georgia. Okay. So Giorgia, okay, Meloni is the Prime Minister of Italy, right? So she has been declared as the Man of the Year. My God, what is happening? Woman of the Year, they are some. There was this recent award show where the Woman of the Year was a transgender man, and Man of the Year is a woman. So there is a lot of hypocrisy going on in the world. Everybody is wanting, dying to take each other's place, and not comfortable with with their own sex for some reason and gender. All right. Okay. Scrap is to not continue with a system or plan. All right. So boycott your pocket money. Boycotting your pocket money is a great idea for your parents' side, from your parents' side. Boycotting your pocket money is the only threat that parents know. Okay. Is the best step forward for parents as soon as you misbehave, so you can put it in anyway. On the discussion of increasing my pocket money, my family members boycotted that idea and declared it as a scrap. Very nice, Rahi. Good job. It's never gonna happen, Rahi. Ma'am, I wanted to ask, like the Hindu Delhi editorial हमें पढ़ना होता है? Navasha, अगर आप पढ़ के आओगे तो it is beneficial for you. Even if you read it after we are done with the class, it is still fine. Okay. Here the what we are trying to do यहाँ करने का मकसद ये है. पहली बात तो कि आपकी वोकेबलरी स्ट्रेंथन करने का मकसद है, एंड दूसरी बात इज दैट कि आपको कैसे पढ़ना है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर सपोज टू लुक फॉर, ये हम देखते हैं यहाँ से. ओके, सो दिस इज बेसिकली फॉर योर ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग कि कितना कॉम्प्रिहेंड करना है और क्या मतलब हो सकता है इस स्टेटमेंट का. ओके, सो दैट व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग यू नो कि ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, सो that is the purpose. So it is up to you. You want to read it and come, it will be better for you. If you don't want to read it and come, you can read it anytime. तो मैंने 60 minutes बोला है ऐसे भी नवाशा to read, right? So in that 30 minutes you are supposed to read. ठीक है, आपको पढ़ना होगा, न्यूज़पेपर पढ़ना होगा at least 30 minutes a day. Okay, all right. Safe. Ravneet, the new wave of boycotting everything and anything due to any minor caused inconvenience, any inconvenience caused, okay, any minor inconvenience caused can be a huge setback for youth. Despite this, the new bill passed by the coalition government to strike down this, the new bill passed by the coalition government
Uh, Despite this, the coalition government has proceeded to strike down the new bill. Okay, ऐसे होना चाहिए रवनीत. Okay, ma'am, it did declare, but she is a woman. Yeah, absolutely, absolutely. I understand, and it is something that is really weird going on. Aditya, I totally get it, which is just not fair. Man of the year should be a man, and woman of the year should be a woman, right? Absolutely. The right to protest in a certain way can't be justified. Scrapping the old flexible law could be a huge setback for the Knesset. All right. Okay. Good job, Ravneet. The gangster are always proud of their the gangsters are always proud of their doctrine of their leader, but mostly all of them gets struck down by police. Okay, struck down by police. Past tense use करेंगे, struck down. Okay. हाँ जी. हाँ, मैं वही सिखाती हूँ. मैम, my network is not working. ओहो, एक और मैसेज है. ओहो. When I didn't get to see Doraemon. Oh my God. No, I'm sure you still watch it, Somesh. I'm sure you still watch it. Why do I feel like you're lying? In childhood, you have specifically explained. I scrapped I scrapped the plan to be a good boy, and scrapped the plan of being a good boy, and that was a huge setback for my mother. Okay. All right. Navasha, your comment, ma'am. Like the Hindu का Delhi editorial पढ़ना है. No, the Hindu editorial का, yes, the Hindu editorial का आपको the Hindu का editorial section जो आता है, okay, editorial sections, editorials लिखा हुआ होता है, वो आपको पढ़ना है. Okay, editorials आपको कोई भी पढ़ना है, but majorly अगर आप the Hindu का editorial section पढ़ोगे तो बहुत ही फायदा करेगा. Okay, so you are supposed to read the editorial section. Okay. Doctrine क्या होता है? A belief or a set of belief, especially political or religious ones, okay, that are taught and accepted by a particular group, okay. तो doctrine क्या होता है? एक belief होता है या set of beliefs होता है, okay. Belief या set of beliefs, okay, स्पेशली पॉलिटिकल और रिलीजियस, या तो पॉलिटिकल होगा या तो रिलीजियस होगा. ऐसे बिलीफ्स जो होते हैं जो पढ़ाया जाता है, ओके, जिनके बारे में एक पर्टिकुलर ग्रुप को पढ़ाया जाता है और वो एक्सेप्ट करते हैं इस पढ़ाई को, दोज थिंग्स आर कॉल्ड डॉक्ट्रिन्स. ओके. ऑल राइट. And ma'am, yes, Ravneet, absolutely. And ma'am, like today is my second class, so do I have to watch the previous class? Like started this from yesterday only. These are the only two classes that we have had this year. तो यहीं से शुरू करना है. Navasha, you are absolutely in the right place, right time. Okay, don't worry about it. Okay. Collision government किसको कहते हैं? Collision government किसको कहते हैं? A collision government is a form of government in which political parties cooperate, okay, to form a government. Okay, collision government एक ऐसा government होता है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं? मिलके एक गवर्नमेंट बनाते हैं. ओके, दो पॉलिटिकल पार्टीज मिलके एक गवर्नमेंट बनाते हैं. और ये क्यों होता है? द यूजुअल रीजन क्यों होता है कि क्यों ये मिलके बना रहे? क्योंकि उनके पास मेजोरिटी नहीं रहती है. ओके, जितना इलेक्शन जीतने के लिए मेजोरिटी चाहिए होता है वो नहीं रहती है, तो वो कोलाइड दूसरे गवर्नमेंट के साथ हाथ जोड़ लेते हैं एंड दे मेक अ न्यू गवर्नमेंट. ओके, दैट इज कॉल्ड कोलिजन गवर्नमेंट. सो हमने इस पेज में कौन कौन से वर्ड्स देखे? ओवरऑल देखा. ओके, स्ट्राइक डाउन समथिंग, किनेसेट, सेटबैक, बॉयकॉट, स्क्रैप, डॉक्ट्रिन एंड कोलिजन गवर्नमेंट. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज.
Hmm. Okay. Moving on to the next page. Dissent. Okay. Dissent is the next word. Dissent का मतलब क्या होता है? It is a noun. Okay. A strong difference of opinion on a particular subject, especially about an official suggestion or plan or a popular belief. किसी popular belief के ऊपर, okay? या किसी official suggestion के ऊपर. Difference of opinion रखना, okay? कि majority का ये ओपिनियन है बट स्ट्रॉन्ग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखना कि नहीं ये सही नहीं है ओके या यही सही है मेरे हिसाब से आप जो भी बोलो यही सही है ओके दैट इज डिसेंट एंड दोज पीपल हु डू इट okay those who have strong difference of opinion and they are trying to show their strong dislike or disapproval of what the majority believes they are called dissenters okay dissenter okay so जो dissent करते हैं उनको dissenter कहते हैं okay all right moving on to the next one ठीक है उसके बाद फिर क्या है सेरेमोनियल ओके सेरेमोनियल इज एन एडजेक्टिव मतलब इसके बाद एक नाउन लगेगा ही लगेगा ओके सेरेमोनियल इज एन एडजेक्टिव ओके सो रिलेटेड टू यूज्ड इन और इन्वॉल्विंग अ सेरेमनी ठीक है ऐसा चीज जो या तो सेरेमोनियल मतलब या तो उससे रिलेटेड है सेरेमनी से रिलेटेड है या तो सेरेमनी में यूज होता है या तो उसमें सेरेमनी चाहिए होता है इन्वॉल्विंग अ सेरेमनी ओके a fixed set of formal acts performed on important social or religious occasions okay okay so it is basically एक set of फिक्स्ड एक्ट्स जो होते हैं जो आप किसी भी रिलीजियस ओकेजन में या सोशल ओकेजन में हर बार आप ऐसे ही करते हो ओके दैट इज अ सेरेमोनियल प्रोसेस ओके सो मेक हिंदू एडिटोरियल योर ceremonial process okay daily ritual okay so it should be like a ceremony that is performed not on occasions but daily okay all right okay then we have precarious He did everything in his power to suppress political dissent. Very nice, Aditya. Good job. So, Mesh, a coalition government has been formed as the black ants and red ants refuse to stay calmly together. Sorry. Good job, Samesh. Yes, Aditya is absolutely right. All right, moving on to the next one. Precarious, okay? Precarious is an adjective. Precarious का मतलब क्या होता है? In a dangerous state because of not being safe or not being held in place firmly, okay? So कोई भी चीज precarious होता है मतलब वो कभी भी गिर सकता है because it is not held fast, okay? It is not held in the right place or it is loosely held, okay? तो final destination में जैसे दिखाते हैं, okay? That there is this truck going with huge logs okay and they are not precarious okay they are not precariously held okay तो उसके वजह से क्या होता है वो गिरने लगता है उसके बाद तबाही मचती है और ये वो ओके सो समथिंग दैट इज नॉट फर्मली फिक्स्ड इन अ प्लेस जिसके वजह से इट बिकम्स डेंजरस ओके ओके प्लमेट इज अ वर्ड जो आप देखोगे हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है ओके प्लमेट इज अ वर्ड ये दोनों न्यू वर्ड है ये दोनों आपने नहीं सुना होगा पहले प्लमेट इज अ वर्ड सुना होगा मतलब मीनिंग इज नॉट वेरी क्लियर टू लॉट ऑफ पीपल बट ठीक है प्लमेट का मतलब क्या होता है टू फॉल वेरी क्विकली एंड सडनली ओके धप is plummet okay plummet is to fall very quickly and suddenly okay is to plummet ठीक है so it is a verb form that means you can change it to plummeting okay the prices of oil
Suddenly the price of oil suddenly plummeted. Okay, the price of oil suddenly plummeted, मतलब अचानक से drop हुआ. ऐसा नहीं होगा, लेकिन just wishful thinking. The price of oil suddenly plummeted. Okay, so it is to fall very quickly and suddenly. Okay, is to plummet. All right, then we have trigger. Okay, trigger is a word that is used a lot by the Gen Z. And what are these other? Oh, okay, let's just take Gen Z. Okay, so this is a trigger word for me. This triggers me. That triggers me. Everything around me triggers me. This is such a trigger. Okay, so people use it in this way. Okay, that means trigger का मतलब क्या होता है? To cause something to start. Okay, so you start feeling. This was the, हम ये देखेंगे, इस word को बहुत ज्यादा use करने वाले हैं हम भी. Okay, not in the way that Gen Z आप लोग जैसे यूज करते हो. ओके, वी आर गोइंग टू यूज दिस वर्ड इन द सेंस कि जब हम बात कर रहे हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जब हम देख रहे हैं क्वेश्चंस को कैसे एलिमिनेट, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करते हैं, तो दिस सर्टेन वर्ड्स विल बी ट्रिगर वर्ड्स जिसके बेसिस पे हम उसको एलिमिनेट करेंगे. ओके, कि इस वर्ड से पता चल जा रहा है कि इट इज रॉन्ग. ओके, सो ट्रिगर इज समथिंग दैट स्टार्ट समथिंग. ओके, कॉज, वो कॉज होता है जो किसी चीज को इनिशिएट कर देता है. ओके, सो दिस इज what trigger is. Okay, so to cause something to start is trigger. Okay. Mm-hmm. A collision government, ये तो मैंने पढ़ लिया था. He did everything, ये भी मैंने पढ़ लिया था. The strong wind almost knocked him off his precarious perch on the edge of the cliff. Very nice, Aditya. Wow. Wow. Adityas are on fire today. Um, Asif, inside collision government, majority party always have, I think, the art or threat from minimum threat, I think, threat from minimum seat party to scrap out, end up, uh, which ends up collapsing, which ends up in the government collapsing in a particular region. Okay, rephrase that, Asif. Okay, rephrase that. Aditya, stock prices plummeted 40% during the scandal. Very nice, Aditya. The dogmas and the insight of Khalistanis is precarious to India's sovereignty and security. Very nice, Aditya. Again, the other Aditya. Wow, good job. Savi, the price of sugar suddenly plummeted. Okay, plummeted. हो गया, खत्म हो गया. So it is in the past. So simple past use करेंगे, है ना? The data sheet, sorry, the date sheet for the final exams triggered Samara's anxiety to start. Okay, Samara's anxiety. बस इतना ही. Start वही trigger ही तो start होता है. Okay, that is the word for starting. Okay, so you don't have to use so start twice. Okay, ठीक है. Navasha, it is absolutely correct. Just that anxiety. Okay, triggered her anxiety. Very nice. Okay, so Somesh, when Tommy had no dissent with the Chinese brothers, but as they, okay, okay, Tommy had no dissent. Okay, when Tommy had no dissent with the Chinese brothers, but as they said something bad, as soon as they said something bad to his brother, to his mother, he and he and other Shelby brothers refused to be kind towards them, okay, or to them. Okay, good job, Somesh. Ravneet, recently the old humanitarian concern related to the world ending in a specific time frame resurfaced the internet, triggering many people. Again, some emerging as reservist and many showing dissent. Very nice, Ravneet. Good job. This was very nice. Trigger is to cause something to start. Humanitarian is an adjective. Okay, the humanitarian activity या humanitarian work हम generally use करते हैं. Okay, तो noun use करते हैं इसके बाद. A person who is involved in
or connected with improving people's lives and reducing suffering is a humanitarian activity, okay, or humanitarian work, okay. So people who have been doing a lot of humanitarian work do a lot of social service, okay. वो लोगों की कठिनाई को दूर करने की कोशिश करते हैं, परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते हैं, उनकी पीड़ा को दूर करने की कोशिश करते हैं, okay. That is the work of a humanitarian, okay. Reservist is a noun जिसका मतलब होता है a person who is involved in or connected with improving people's lives and reducing suffering. What the hell? Did I just know? Yes, I copied the same thing. यहाँ पर होगा basically reservist is a person who is in reserve in the military, got trained, has got trained for combat, okay, um, and is in standby, okay. ओके, तो ऐसा इंसान तो बहुत लोगों को रिजर्व में रखा जाता है, ओके। ये लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, ओके, बट दे आर रिजर्व्स, ओके। सो जैसी ही सिचुएशन और बुरी हो जाएगी, लेट्स से देयर इज अ वॉर एंड पीपल हु आर केप्ट एज अ रिजर्विस्ट, दे आर ट्रेन्ड, एंड जब उनकी जरूरत पड़ती है दे गो एंड फाइट, ओके। दोज आर रिजर्विस्ट, ओके। सो रीसर्फेस इज द लास्ट वर्ड, to appear again after not being seen or heard, okay. So resurface, okay, so surface पे वापस से आना, okay. So generally हम पानी के लिए use करते हैं the ship that sank years ago resurfaced suddenly out of nowhere, okay. Resurface, it is talking about in water, ठीक है। लेकिन in general situation also किसी चीज के बारे में हम बहुत ज्यादा दिन तक बात नहीं किए हैं या बहुत दिन तक उसको उस ट्रेंड को देखा नहीं गया है, and it suddenly comes back, so it has resurfaced, all right. When she was going to plummet on the floor, I caught her like a ball of cushion, you can say. Yeah, Somesh, yeah. Superman. Somesh. All right. Aditya, they kept my morale up and had a bit of banter when they found I was an army reservist. Yes. Yes, Aditya, absolutely correct. Good job. And leaving me in questioning again. And leaving me in questioning again. And leaving questioning the line between a healthy and the precarious state of debate, the plummet of human patience can also be seen since the last it happened, making it a bigger problem this time. All right, Ramneet, but did not make a lot of sense, this statement, but good effort, Ramneet, good effort. Okay. So congratulations to our CLAT topper, Yashasvi Dhakar, with All India rank 8. These are our other toppers who have made it to the NLU and we are still counting. Unacademy Law Admission Test हो रहा है January 7th को. Please make sure that you scan this QR code and enroll. अगर आपको QR code नहीं दिख रहा है तो you can just go to the platform and go to the store. You will be able to see this opportunity जिसमें आपको 90% तक scholarship मिलेगा for the top 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकता है आपको इसमें, ओके। टॉप 10 रैंकर्स को 2500 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। माइस्ट्रो बैच इज अ बैच फॉर MHCT and CUET UG 2024. I am taking English language in this batch and आज आपका पहला क्लास है, okay. So if you want to enroll in this batch, please do not forget to use my code Vaishnavi10 to get maximum discount. 11,999 में बस मिल रही है, okay. Target NLU is a droppers batch for CLAT aspirants of 2025. You can use my code Vaishnavi10 to enroll in this batch. All right.
CLAT iconic program के फायदे क्या हैं? Everything that you get in Plus, which is a basic plan, you get it over here. Plus raise a hand feature, plus live mentoring session, plus detailed physical notes that will be delivered at your doorstep, and printed full length mock test will also be delivered at your doorstep, and you will be able to attend offline mock test at our Unacademy center. All right, let's talk about blow to the Netanyahu. Okay, Netanyahu, Benjamin Netanyahu. Netanyahu. Okay. So pens and highlighters out, everyone. Pens and highlighters out. Blow to Netanyahu. Okay. Israel's government should end the war, not focus on judicial overhaul. Okay. So this is should. Okay. The author has used should. So this becomes the conclusion. Okay. कि इजराइल की गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, वॉर खत्म करनी चाहिए, ओके, एंड करना चाहिए वॉर को, और किस पे नहीं फोकस करना चाहिए, जुडिशियल ओवरऑल पे नहीं फोकस करना चाहिए, ठीक है, जुडिशियल चेंजिंग ऑफ द जुडिशियल लॉज पे फोकस नहीं करना चाहिए, उनको वॉर पे फोकस करना चाहिए कि इसको खत्म करें, ओके, दैट इज द कंक्लूजन दैट द ऑथर हैज कम अप विद. ऑलराइट, where is it, Apurva, your sentence? I cannot see. Hi, Apurva, but I cannot see your sentence. Oh, I'm so sorry to hear that, Apurva, but try. आप हमेशा एक sticky notes on करके रखा करो. Whenever you're making sentences, please make sure that you, if it is a long sentence, you make it over there and then copy paste over here. अगर नहीं हो रहा है, तो उसको break it into two halves and then post it over here. Okay? Alright, so शुरू करते हैं हम main idea से, okay? The Israeli Supreme Court's decision to strike down a law passed by the Knesset last year that sought to limit the judiciary's power is a clear setback to the government of Prime Minister Benjamin Netanyahu, okay, which is fighting a brutal war in Gaza. ओके, तो इस ऑथर ने क्या, ये है मेन आइडिया. ओके, ऑथर किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं इस पूरे एडिटोरियल में? यहाँ पर मेन आइडिया आपको समझ में आ गया है कि इजरायली सुप्रीम कोर्ट जो है, उन्होंने क्या किया है, स्ट्राइक डाउन कर दिया है एक लॉ को. ओके, दे हैव, दैट मींस इट्स नो लॉन्गर लीगल. केनेसेट लास्ट ईयर पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था, जिसको इन्होंने, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है, जिसमें क्या था कि लिमिट करना था पावर, जुडिशरी पावर्स को लिमिट करना था, और ये उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है. ओके, तो ये क्लियर सेटबैक है एक ऐसे गवर्नमेंट के लिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, they are fighting a brutal war in Gaza. Okay, so we are still talking about Supreme Court judiciary powers when there is a war, brutal war going on in Gaza. That's what the author is trying to point out. ठीक है? All right. अब देखते हैं आगे. Now the author is going to elaborate. Okay, अब elaborate करने वाला है the author. The law passed with 640 votes in the 120 member parliament after an opposition boycott in July 2023 had scrapped the responsibility doctrine, a legal standard used by the country's judges to assess government decision and ministerial appointments. Okay, तो अब ये जो लॉ जो पास हुआ था, ओके, 640 वोट्स के साथ पास हुआ था, 120 मेंबर्स पार्लियामेंट, किनेसेट आपको पता है 120 मेंबर्स रहते हैं इसमें. ओके, आफ्टर एन ऑपोजिशन, एक ऑपोजिशन ने इस लॉ को बॉयकॉट कर दिया था 2023 में. ओके,
और उसके बाद फिर इसको स्क्रैप कर दिया गया था। इसमें क्या स्क्रैप कर दिया गया था, इसमें से क्या हटा दिया गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्ट्रिन हटा दिया गया था। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्ट्रिन को हटा दिया गया था। ओके, दिस स्पेसिफिक सेक्शन वाज रिमूव्ड। ओके, इस चीज को हटा दिया गया था। ओके, सो अ लीगल स्टैंडर्ड, अब इसके बारे में बता रहे क्या है, एक लीगल स्टैंडर्ड है जो यूज किया जाता है कंट्री के जजेस से, जजेस के द्वारा, ताकि वो असेस कर सके। ओके, देख सके गवर्नमेंट का डिसीजन एंड मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट्स को देख सके। ओके, उस पे नजर रख सके। ओके, दे कैन, ओके, दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्ट्रिन। ओके, the legislation which amended is Israel's basic laws. Okay, अब जो legislation जिसने amend किया Israel's basic law was part of a reform package by the right religious government to strengthen the hand of the government over the judiciary. Okay, तो yeah, and I suddenly come back as well. Anyway, the, Mhm. Sorry. Okay, so what it says is, hmm, बोल रहा है कि इधर ये जो लेजिस्लेशन है विच अमेंडेड इजराइल्स बेसिक लॉज, ओके, बेसिक लॉ को अमेंड जो किया था, ये किस चीज का पार्ट था, पार्ट ऑफ रिफॉर्म पैकेज बाय द राइट रिलीजियस गवर्नमेंट। ओके, राइट रिलीजियस जो कन्वेंशनल साइड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, ट्रेडिशनल गवर्नमेंट, ओके, द one that believes in conventional authority and conventional way of ruling, वो जो राइट रिलीजियस गवर्नमेंट थी, ओके, राइट साइड ऑफ द गवर्नमेंट, द लेफ्ट विंग एंड द राइट विंग, ओके, राइट विंग ऑफ द गवर्नमेंट इज जनरली द कन्वेंशनल, एंड उसके साथ रिलीजियस भी वर्ड जोड़ा गया है, तो राइट भी थी और रिलीजियस भी थी। ओके, दैट गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द जुडिशरी, और इन्होंने ये क्या किस लिए किया था, ताकि गवर्नमेंट का हैंड स्ट्रेंथन हो जब जुडिशरी के सामने आए वो। ओके, सो बेसिकली they wanted government to have more power than the judiciary. Okay, despite street protests, the coalition government passed its first part in the Knesset. Okay, तो बहुत प्रोटेस्ट हुआ इसके अगेंस्ट, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई थी उन्होंने पहला पार्ट तो कनेसेट में पास करवा दिया। ओके, government supporters claim that the court had no power to rule on a basic law which it had not done in the past. Okay, so basically government supporters जो इस कोलिशन गवर्नमेंट के सपोर्टर्स थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये क्लेम किया कि कोर्ट को कोई पावर नहीं है, कोर्ट को कोई पावर नहीं है बेसिक लॉ के ऊपर। ओके, बेसिक लॉ के ऊपर कोर्ट को कोई पावर नहीं है, विच इट हैड डन, विच इट हैड नॉट डन इन द पास्ट। ओके, जो वो नहीं किए थे पहले। ओके, बट ऑन मंडे द कोर्ट sitting with a full panel of 15 judges for the first time in its history, पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ कि 15 के 15 जज बैठे हुए थे इस डिसीजन मेकिंग में। ओके, स्टेटेड, ओके, उन्होंने क्या बोला, 12-3, ओके, मतलब 12 were for this and 3 were against it, that it had the power to rule over basic law. ओके, उन्होंने क्या स्टेट किया कि हाँ, जुडिशरी को पावर है। 12 आउट ऑफ 15 ने स्टेट किया कि जुडिशरी को पावर है बेसिक लॉज के ऊपर। 8 जजेस अगेंस्ट 7 डिसेंटर्स। ओके, 8 जजेस अगेंस्ट 7 डिसेंटर्स। ओके, 8 इस चीज के सहमत थे और 7 डिसेंटर्स थे, मतलब they were not of the same opinion. Okay, they had a different opinion. Okay, ruled in favor of striking down the law that scrapped the responsibility standard. Okay, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या बोला कि इसको स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए। ठीक है, ये लॉ को स्ट्राइक डाउन करना चाहिए। ओके, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैंडर्ड्स को, yes, they were against it. You're talking about the 7 dissenters. Yeah, 8 judges against 7 dissenters, right?
ऑलराइट, सो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने कहा कि ये इसको स्ट्राइक डाउन करना है, ओके, दिस लॉ हैज टू बी स्ट्राइक डाउन, दैट स्क्रैप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैंडर्ड्स को स्क्रैप किया जाता है, इसको हटाना है, ओके, दे वांटेड टू स्ट्राइक दैट डाउन, ऑलराइट, ऑलराइट. The responsibility doctrine is not a unique standard employed बाय इजराइल कोर्ट्स, ओके, तो इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्ट्रिन है, ओके, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ से, रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्ट्रिन, ओके, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्ट्रिन है, ये बस इजराइल के कोर्ट में नहीं है, ओके, जजेस in other liberal democracies such as Australia, Canada, and the UK assess the responsibleness of government's decision. Okay, तो ये सारी जगह होता है. Okay, दे मतलब सारी जगह नहीं होता है. ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्ट्रिन है, ये प्रैक्टिस किया जाता है लिबरल डेमोक्रेसीज में भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा. नॉट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. ये बस आपको एग्जाम्पल दिया है कि ये गवर्नमेंट यूनिक नहीं है in having responsibility doctrine. Okay, in Israel, a country with a single house of parliament, a ceremonial president, and with no written constitution, the independence of judiciary is critical to ensure that there are checks and balances in the system. Okay, देखो, अब ऑथर ने ये पॉइंट किस लिए बताया? ऑथर ने ये पॉइंट इसलिए बताया कि ऐसा कुछ यूनिक नहीं है इसमें, ओके, कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्ट्रिन है, लेकिन इजराइल में क्या डिफरेंस है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके से? ओके, दिस इज कॉमन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्ट्रिन है, लेकिन इजराइल में कैसे डिफरेंट है? ओके, डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर, ओके, अ कंट्री विथ अ सिंगल हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एक ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, ओके, सेरेमोनियल प्रेसिडेंट होते हैं, ओके, और उनका कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ओके, सेरेमोनियल प्रेसिडेंट है, कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्रिटिकल हो जाता है, ओके, इस केस में क्रिटिकल हो जाता है कि कोई तो चेक और बैलेंस रख रहा है कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रही है गवर्नमेंट उस पे, ओके. Israel's far right government was trying to tip this balance in favor of the Knesset. Okay, तो जो far right wing थे, okay, of the government, जो far right religious wing थी, वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे? कनेसेट में, पार्लियामेंट के फेवर में ये डिसीजन को पुश करने की कोशिश कर रहे थे ताकि जुडिशरी का कोई पावर ना रहे. ओके, विच is dominated by right wing. Okay, ये basically right wing है, pro settler है, and ultra orthodox parties हैं. Okay, so right wing is basically orthodox, yes, conventional orthodox side. तो उनके फेवर में ये, ताकि उनके पास सुप्रीम अथॉरिटी हो जाती, सुप्रीम पावर आ जाती. Okay, that no one stands in the way, not even the judges, not even the law. Okay, the Supreme Court has put the brakes on this overall plan for now. Okay, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्लान पे क्या किया है? रोक लगा दिया है. ओके, फॉर नाउ. ओके, दे हैव पुट अ स्टॉप टू इट. ओके, तो सब जगह के जजेस और कोर्ट्स कुछ ज्यादा ही बैड एस होते हैं. राइट, दे मेक डिसीजंस based on rationality. Okay, its decision comes at a precarious time for Mr. Netanyahu. Okay, एक precarious time पे आया है, उनका अभी डामाडोल हो रहा है सिचुएशन. ओके, who has seen his popularity plummeting after his government failed to detect and stop the October 7th Hamas attack that killed 1,200 Israelis. Okay, तो अब जब उनका उनका सिचुएशन, अब उनकी पॉपुलैरिटी घटते जा रही है क्योंकि आ, उनकी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं कर पाई. ये जो अक्टूबर 7th को हमास अटैक हुआ था, उसमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई 1,200 इजरायलीज को. जिस अटैक जो हुआ था जिसमें 1,200 इजरायलीज मारे गए थे, उसको नहीं, उनको नहीं प्रोटेक्ट कर पाई, इसीलिए अब उनका सिचुएशन थोड़ा डामाडोल हो रहा है. ओके, द वॉर ऑफ ऑलमोस्ट 3 months in Gaza, claiming at least 22,000 lives, has triggered a humanitarian tragedy, but Israel is far from meeting its declared objectives. Okay, अब देखो, अब ये वॉर 3 महीने से चल रहा है, ओके, गाजा में, और
22,000 लोग मारे गए हैं, ओके। और अब इसके वजह से ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी हो गई है, ओके। इंसानियत पे बहुत ज्यादा ब्रूटैलिटी हो रही है, इंसानों पे बहुत ज्यादा ब्रूटैलिटी हो रही है। एंड ये एक इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग सिनेरियो, ठीक है। लेकिन इजराइल का अभी तक वो जो ऑब्जेक्टिव से इन्होंने स्टार्ट किया था, ओके, ये चीज वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। इट इज नॉट इवन क्लोज टू मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव 3 महीने के वॉर में भी। On the day of the court ruling, the Israeli military announced the drawing down of thousands of reservists from Gaza and sending them back to work to strengthen a shrinking economy. ओके, तो अब जब ये कोर्ट ने ये रूलिंग की थी, ओके, सो इजरायली मिलिट्री ने क्या अनाउंस किया कि वो बहुत सारे रिजर्विस्ट को वापस ले आएंगे, ओके। रिजर्विस्ट जो उन्होंने रखा है वहां पर, उनको वापस ले आएंगे, ओके, गाजा से, ताकि और उनको वापस से काम पे भेजेंगे, ताकि हमारी इकोनॉमी, ताकि इनकी इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रेंथन हो पाए। लोग काम करेंगे नहीं, बस वॉर पे जाएंगे तो इकोनॉमी डेफिनेटली श्रिंक होगी, ओके, इट विल डेफिनेटली श्रिंक, ओके। In a recent poll, 69% of Israelis want election immediately after the war is over, okay? तो अभी एक recent poll हुआ है जिसमें क्या कहता है ये recent poll? ओके, रीसेंट पोल हुआ है जिसमें 69% ऑफ इजरायली क्या मांग रहे हैं, इलेक्शंस इमीडिएटली आफ्टर द वॉर इज ओवर। जैसे ही ये वॉर खत्म होता है उनको तुरंत इलेक्शन चाहिए कि भाई हम गवर्नमेंट चेंज करें, ओके। तो 69% लोग ऐसे हैं, तो इसीलिए बोला जा रहा है मिस्टर मिस्टर नेतन्याहू का सिचुएशन अभी बहुत डामाडोल है, ओके। मिस्टर नेतन्याहू had claimed यूनिटी व्हेन ही डिक्लेयर्ड वॉर ऑन हमास। उन्होंने क्या क्लेम किया था कि हम यूनाइटेड हो जाएंगे वापस से, जब उन्होंने वॉर डिक्लेयर किया था हमास पे। बट एज द वॉर ड्रैग्स ऑन, और जैसे जैसे ये वॉर खिंचता चला जा रहा है, डिवीजन हैज स्टार्टेड रिसर्फेसिंग, वापस से डिवाइड हो रहा है इसराइल पूरा इस सिचुएशन में, और डिवीजन दिखने लगा है, ओके। इट हैज वापस से इमर्ज हो रहा है ऑन द सर्फेस, ओके। Any attempts to press ahead with the judicial overhaul plan would only weaken his government further. Okay, अगर ये इस चीज को इस प्लान को जुडिशियल ओवरहॉल जो हुआ है, ओके, इस पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्ट्रिन के ऊपर जुडिशियल ओवरहॉल जो हुआ है, अगर ये कोशिश भी करते हैं इसको कुछ करने का, ओके, इस प्लान को वापस से लाने का अपने गवर्नमेंट, मतलब प्रो राइट विंग अगर ये लाने का कोशिश भी करते हैं इन द कनेसेट, दिस विल नॉट लुक गुड फॉर हिम, ओके। उनके लिए सही नहीं दिखेगा, ओके। सो इंस्टेड द प्राइम मिनिस्टर, तो ये ऑथर ने क्या बोला है कि इसके बजाय प्राइम मिनिस्टर को किस चीज पे फोकस करना चाहिए, ये वॉर खत्म करने पे फोकस करना चाहिए, ओके। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू टेक ब्रिंग इन रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्ट्रिन, कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो ऐसे सिचुएशन, ये सब सिचुएशन ना करके उनको अपना सिचुएशन कैसे स्ट्रेंथन करना चाहिए, अगर वोटिंग होने लगती, इलेक्शंस होते हैं, तो कैसे स्ट्रेंथन करना चाहिए, बाय एंडिंग दिस वॉर, ओके। दैट इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। Yeah, what a great advice, yeah. Yeah, so what do you think is the tone of this editorial? Let's discuss the tone. Mm-hmm. देखो मोस्टली, अब देखो एडिटोरियल्स में क्या होता है, मोस्टली इट इज कंप्लीटली इंफॉर्मेटिव, या आप कह सकते हो मोस्टली ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन ये जो लास्ट के कुछ होते हैं ना, इसके टोन पूछ रही हूँ मैं, ठीक है, कि लास्ट में जब ऑथर अपने ओपिनियन देता है तो क्या बोलता है, ओके। सो क्रिटिकल, यस इट इज क्रिटिकल, ओके, द ऑथर इज बीइंग क्रिटिकल अबाउट इट, द होल सिनेरियो, ओके। एनालिटिकल भी है, ओके, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ डेटा गिवन एज टू प्रो एंड कॉन इट, ओके। ठीक है, एडवाइजरी, मोस्टली assertive, yes, assertive,
Yes. So these are the two predominant tones over here. Critical, because the author is definitely criticizing the government, okay, for looking at issues that are trivial right now, and no, and ignoring the issues that are important and pivotal at this moment, right? So the author is being critical and assertive as well, okay, confidently displaying his yes, कि वहां वहां तो चलता है लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं चलेगा. All right, critical and advisory, yes. All right, that is it for today. Thank you everyone for attending the session, and I will see you again tomorrow, same time. Not the same time, I will try to come a little early. So please make sure that you watch this editorial on a daily basis to see real changes and pivotal changes in your life, okay? I will see you again. Bye bye everyone, take care. Thank you, merci, and au revoir. Bye. Auf Wiedersehen, au revoir, ciao. Bye bye, take care.